So area of similar triangle theorem, statement of this theorem is the ratios of the areas, ratio, this is known as the ratio of the two similar triangle, it is the compulsory condition, triangle should be similar, is equal to the squares of the ratios of their corresponding side. Ratio, this is the ratio, squares, you can see that AB square upon PQ square, their corresponding sides means this side divided by this side, base side divided by base side, and AC just divide side PR, and all have squares. So this is the area of similar triangle theorem, and we will learn it, we will keep in our mind that this is the formula, we will use this formula in the numerical questions. So how can we apply this formula? Let us see the exercise 6.4, and here is the question number 1. से यहाँ लिखेंगे, since area of triangle ABC is given that 64 centimeters square, area of DEF equal to 121 centimeters square, and EF equal to 15.4 centimeter, then find BC if these two triangles are similar. Okay, so since triangle ABC similar to triangle DEF, therefore area of triangle ABC divided by area of triangle DEF equal to, yes dear, you can see it is these two triangles, यहाँ पे हमने ABC और यहाँ पे लिख लिया DEF. So see here BC आपको गिवन है ना, corresponding side is EF, तो आप लिखोगे BC अपॉन EF, और इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, स्क्वायर लिख भी सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर, बट वी विल राइट जस्ट इनटू द फॉर्म होल स्क्वायर. एक्सपोनेंट्स पावर तो आपने पढ़ाई था क्लास 8 में, उसी का यूज करेंगे. दिस इज होल स्क्वायर. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज. एरिया ऑफ ABC इज 64 centimeter square, and area of DEF 121 centimeter square, and this is BC is 115.4 centimeter, sorry EF, तो यहाँ BC की जगह BC ही लिखेंगे, and EF is 15.4 centimeter, and this is whole square. So before solving it, we will write this left hand side just into the square form. 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 square. तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, just you can see that 8 centimeter upon 11 centimeter and whole square divided by BC upon 15.4 centimeter whole square. Now taking the square root from both sides, taking the square root from both sides. तो जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा 8 सेंटीमीटर अपॉन 11 सेंटीमीटर इक्वल टू BC अपॉन 15.4 सेंटीमीटर, तो कैंसिल हो जाएगा. बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखो BC को यहाँ रहने दो, इसको सिर्फ इधर भेज दीजिए, ट्रांसपोज 15.4 जस्ट हियर. So you will get BC equal to 8 into 15.4 divided by 11, and this is centimeter. 11 बन जाए 11, again 11 बन जाए 11. Now remaining is 4, but decimal is there, so you will mark the decimal, and 11 4 जा 44, and this is 14 1.4, 14 8 जा बोलिए
अगर ऐसे नहीं आता है तो 8 4 जा 32 एंड कैरी 1 8 बन जा 8 और यहाँ पे 1 डेसिमल, सो दिस इज सेंटीमीटर. सो डियर दिस इज 11.2 सेंटीमीटर. ये इसका प्रोसेस, इस तरह से हम फाइंड करेंगे. ठीक है.